एक इंटरेस्टिंग वेबिनार लेकर आ रहे हैं सिर्फ अपने भोपाल वासियों के लिए। और आज हम प्रेजेंट करने वाले हैं कुछ एक्साइटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इनफैक्ट हम सब लोग आज लॉकडाउन में हैं, इस पैंडेमिक के बीच में हैं, और इस पैंडेमिक के बीच में हम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं जो कि बहुत रेलेवेंट रहेगा इस टाइम के लिए। सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स का वेलकम करना चाहूंगा और अपने सारे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो यूट्यूब पे, जो ट्विटर पे, जो लिंक्डइन पे या जो फेसबुक पे हमारे से जुड़े हुए हैं, तो उन सबका मैं स्वागत करता हूं और उन सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने जो चैनल है यूट्यूब पे अगर है तो उसको आप अपना सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाइए। अगर आप वो बेल बटन को दबाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और हमारे जो एक्साइटिंग वेबिनार्स हम जो लेकर आते हैं वो आपके पास हमेशा आती रहेंगी। ये वेबिनार ना सिर्फ भोपाल वासियों के लिए है बट सारे हिंदुस्तान के टॉप सिटीज के लोग जो हैं, स्पेशली सेंट्रल इंडिया के अंदर, जो मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर और जो सेंट्रल रीजन के अंदर जो भी दूसरी सिटीज हैं, ये बहुत ही उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल रहेगी। सो जो भी आपकी क्वेश्चंस हैं आप टाइप कर सकते हैं, हम लाइव आपके साथ में जुड़े हुए हैं और हम क्वेश्चंस लेते रहेंगे इस सेशन के थ्रू। ये बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन होने वाला है और हम यही कोशिश करेंगे कि सारे आपके जो प्रश्न हैं, जो भी आपके बिजनेस वाले जो क्वेश्चंस हैं, हम आपको उनके आंसर्स देंगे और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आपके साथ लेकर आएंगे। हमारे साथ में आप देख रहे हैं दूसरी स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं श्री नदीम अनवर जी, जो हमारे भोपाल के फ्रेंचाइज कंसल्टेंट हैं और जो आपके करीब वहीं पे भोपाल में लोकेटेड है, स्थित है। आप जाकर के नदीम जी से कभी भी मीट कर सकते हैं, मिल सकते हैं और अपनी फ्रेंचाइज बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, कोई भी नया बिजनेस आपको अगर स्टार्ट करना हो, एजेंसी, डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, कोई भी तरह का बिजनेस आपको लेना हो तो नदीम जी भोपाल में अवेलेबल है और आप उनके थ्रू अपनी जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कर सकते हैं। सो नदीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आई वुड लाइक यू टू टेल अ फ्यू वर्ड्स। कुछ अपने जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कुछ शब्द बताइए, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए एंड देन विल टेक दिस फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। Thank you very much, Amit. Thanks for giving me this opportunity. वैसे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे भोपाल में बहुत पहले से जानते हैं। मैं ऑलमोस्ट 30 साल से भोपाल में आईटी कम्युनिटी को सर्विस कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ और एक लंबा समय मैंने विप्रो लिमिटेड के साथ गुजारा है। ऑलमोस्ट 93 से लेकर अभी तक 2015 तक मैं विप्रो लिमिटेड के लिए काम किया है एज ए बिजनेस पार्टनर। तो ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि हर तरह के वर्टिकल्स जो हैं भोपाल में और मध्य प्रदेश में, सभी लोग जो हैं वो मुझे एज ए नदीम और एज ए विप्रो बिजनेस पार्टनर जो हैं वो जानते हैं। और मैंने जो है वो फ्रेंचाइज बाजार जो है वो इस वजह से ज्वाइन किया है क्योंकि मैं चाहता था कि जो एक्सपीरियंस मैंने इतने सालों में किया है और इतना जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ है उसको मैं अपकमिंग जनरेशन्स के साथ शेयर करूं और अपने उन साथियों के साथ शेयर करूं जो अभी एज ऑन टुडे एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो भोपाल के अंदर जो अभी वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आई हैं उनमें अगर इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए भी जो है वो मैंने एक तरीके से ब्रिज की तरह मैं काम करना चाहता हूँ ताकि नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भोपाल में लाई जा सकें। अमित जी जो हैं वो फाउंडर हैं और सीईओ हैं फ्रेंचाइज बाजार के, बेंगलोर बेस्ड हैं और मैं उनके साथ जुड़कर ये काम भोपाल वालों के लिए करना चाहता हूँ। ओवर टू अमित जी। धन्यवाद नदीम जी। अब हम चलेंगे जो हमने हैंड पिक की है अपॉर्चुनिटीज, जो आप और हमने मिलकर के भोपाल की जो करंट परिस्थिति है, जो वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके बेसिस पे हमने बहुत ही एक सिलेक्ट 5 अपॉर्चुनिटीज पिकअप की है। आज हमारे वेबसाइट पे 3 अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई भी तरह का बिजनेस कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर करना चाहता है तो वो फ्रेंचाइज बाजार पे जा सकता है और वहां पर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, सारे सेगमेंट्स में ओवर 50 प्लस सेगमेंट्स हैं जहां पर हम अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करते हैं। रोज कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं
सो आप वहां पे जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ में, और कोई भी नई अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हैं तो वो आप वहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम चलेंगे हमारी टॉप 5 अपॉर्चुनिटीज, जो इमर्जिंग 5 अपॉर्चुनिटीज हैं भोपाल के लिए। मैं चाहूंगा कि नदीम जी इसको इंट्रोड्यूस करें। नदीम जी, ओवर टू यू। थैंक यू अमित। भोपाल के लिए जो 5 अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें नंबर 1 पे जो है वो है दवा डिस्काउंट। दवा डिस्काउंट जो है वो अगेन एक रिटेल आउटलेट है, फार्मेसी से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो है वो द लस्सी कॉर्नर के नाम से है। अगेन ये जो है लस्सी कॉर्नर जो है उसको आप एज ए फूड फ्रेंचाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, क्योंकि उसमें फूड एंड बेवरेजेस दोनों ही शामिल हैं। थर्ड अपॉर्चुनिटी जो है वो है मी एंड मॉम्स प्राइवेट लिमिटेड। अगेन ये जो अपॉर्चुनिटी है इसमें जो इनका ब्रांड नेम है वो मी ब्रांड नेम है, और ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि भोपाल में के लिए ऑफर की जा रही है। फोर्थ अपॉर्चुनिटी जो है वो धनुष MEP सेंटर है। ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि ट्रेनिंग सेंटर में इंटरेस्टेड हैं और जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो अगर स्किल इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अगर जानते हैं तो उनके लिए ये धनुष MEP सेंटर जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिफ्थ अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस्टर एंड मिसिस इडली है। अगेन ये जो अपॉर्चुनिटी है ये फूड फ्रेंचाइज है, और इसमें जो है वो 2 अपॉर्चुनिटीज जो है लस्सी कॉर्नर और मिस्टर एंड मिसिस इडली जो है ये फूड फ्रेंचाइज से जुड़ी हुई है। तो इसके बारे में जो डिटेल्स हैं मैं अमित जी को इनवाइट करूंगा कि वो इन 5 अपॉर्चुनिटीज को जो है वो आप लोगों के सामने 1 by 1 रखें और उनकी डिटेल्स आपके सामने प्रेजेंट करें। ओवर टू अमित जी। ग्रेट, थैंक यू नदीम जी। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में जो हम लेकर आ रहे हैं, जैसे आपको ये पिक्चर दिखा रहा है, ये एक फार्मेसी स्टोर है, और इसके अंदर जैसा जैसा ये नाम डिस्प्ले कर रहा है, दवा और डिस्काउंट। तो यू नो इट्स व्हाट इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप दवा भी दे रहे हैं और डिस्काउंट पे भी दे रहे हैं। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, दिस इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो हम समझते हैं भोपाल के लिए बहुत ही आइडियल होगा। काफी सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए, वी आर गेटिंग क्वेश्चंस। I have Vibhor ji who's mentioned his requirement. We'll get back to you. Ankit Mishra has also sent in a message. We are aware of it, Ankit. The team is working on it, and we also have different people who are asking different things. तो जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आते जाएंगे हम वैसे वैसे उनको लेते चले जाएंगे। Once I explain these opportunities one by one to all of y'all. So this is a brand called Dawa Discount, which is a division of Rajneesh Wellness. It's a very popular company in the pharma space. और जैसे ये नाम बताता है, it is an interesting brand in the category of pharma store. So अगर किसी को भी एक pharmacy store शुरू करना है, तो this is a opportunity which you can start, wherein the investment is 12,51,000 rupees. So all you need is an initial opening stock of 5 lakh rupees. There is a sign up fee of say approximately 2,95,000 rupees. There is a marketing and branding fee of 3 lakh rupees. The required space is around 200 square feet. You need a pharmacist, you need a store handler, and you need a helper. Of course, you'll need a billing software, you'll need a refrigerator, and this is the total cost that is going to, which you'll have to bear to be able to take up the franchise. It's 12,51,000 rupees. Now, what is the difference between a Dawa discount franchise versus a normal medicine store? Well, you get a 20-25% off on branded medicines, whereas typically normal medical stores don't give discounts, or if they give discounts, they give a 10 to 15% discount, and you get a fixed 3 months assured income of rupees 1 lakh per month. Now that's the company's claim in terms of the potential of the business in your region. So you can look at taking up this particular franchise and be sure of an assured income that the company is offering you to start with. Of course, they'll give you completely, complete support in sales and marketing. It's a very, very profitable business model, and it will help you to
start a fantastic a pharmacy franchise in Bhopal, a pharmacy franchise in India, a pharmacy franchise in your city is something that you can look at if you're looking at the Dawa discount franchise model. So this is opportunity number one, which we thought could be just perfect for this particular scenario and for our audience who are looking at taking up something in the retail space, something which is an essential commodity, something that doesn't get affected by lockdowns, that doesn't get affected by any other thing, because medicines are something that is going to be used by consumers in times to come. There's no stopping using of medicines. So we'll now move to opportunity number two. Bhopal is a food loving city. Everybody loves great food, and the second opportunity that we are bringing is exactly in this space. This is the Lassi Corner. Lassi Corner has become very popular in a very short period of time. They've got 212 outlets in 43 cities across India. They've been, they've been followed up, and they've been having very good reviews. They're amongst the number one people on Zomato, Swiggy, Magic Pin, and a lot of other platforms. So all it needs is, you take 25 days to take up this particular franchise, start the business, and get started off with the entire model. So what are the models that we have? Lassi Corner has got three different models. I will explain the first three different models, and then I'll come to additional models that they have. The first model is a takeaway model. Typically अपने को 200 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए जहां पे 5-10 लोग बैठ सकते हैं, और उसका टोटल जो कॉस्ट रहेगा approximately it comes to around say between 5 to 6 lakh rupees of investment. The cafe model is the second model that we're talking of. It's a 200 to 600 square feet where 15 to 25 people can easily sit. A restaurant model is the third model that we're talking of, where it's a 600 square feet space where 25 to 40 people can also easily be accommodated. Now, when you look at an innovative model, beyond these three models, they also have a very, very interesting model called the food street model, which is applicable for all kinds of food courts, and they're also operational in malls, and they operate a cloud kitchen model through which a 24/7 kitchen operates and delivers foods through these Zomatos and Swiggies of the world. They also have arrangements with corporate IT, software companies, large corporate companies, where you can start a IT tuck shop model. Typically, the investment is around 9 lakh rupees. And totally, you have around, say, between 9 to 10 lakh rupees, you can get started off with this particular model. So this is an exciting, interesting model that is now become very, very popular. And if you looked at the public opinion in 2020, an online poll was conducted to choose the best and profitable business model under rupees 10 lakh rupees. And they got 5,000 plus votes for this particular business model. They had 36,000 viewers, and it was rated as the best and profitable business model for investment under rupees 8 lakhs. So हमारे पास में बहुत सारे entrepreneurs ऐसे हैं जो कि एक अच्छा फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक F&B बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि अंडर 10 लाख रुपीस में मिले. तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही आइडियल अपॉर्चुनिटी है, जो कि लो कॉस्ट फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज जो लोग ढूंढ रहे हैं, जिनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए जो कि 10 लाख 8 लाख रुपए के अंदर मिल जाए, और जिसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद इन 1 year है. Most franchise stores that this company has, they claim are have broken even in a year or a year and a half. So average time of breaking even is between 12 to 18 months. So this is one opportunity that you should look at. I mean, you should reach out to Nadeem ji, and if you have a location which is just perfect for this, talk to him, and then we'll be able to start a Lassi Corner franchise in the city of Bhopal or across Madhya Pradesh, in terms of all the locations. In fact, all the small cities and towns, वहां पर भी ये बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही low cost है. It's not a very expensive beverage store. The pricing of the lassi, all the beverages are very, very reasonable. So it definitely can work in all locations across the country. So Lassi Corner is the second opportunity of the day.
as we now move to the third opportunity, which is Me and Moms. Now, this is a retail concept, basically for the mom to be and for the kids. They've got 600 premium quality baby care and maternity products through their own brand called Mimi, which offers a multi-channel shopping environment through retail stores and for internet for enriching experiences. So, it's a very exciting company. It has got a very large range of all kinds of products that are required for the kids and for the mother to be, from infant utility products, toiletries, apparel, footwear, toys, furniture, maternity products. So a large range of products that are required for all kinds of kids, including toys. Toys is a huge part of their category. They have squeeze butt toys, a large number of toys and trolleys and you name the products that a mother would need. So Me and Moms is a franchise that you could explore your location and ensure that you start a retail store that works very well for your city. I'm very sure that they've got over 100 stores. I think around 119 stores. Plus, they are available in 10,500 multi-brand outlets. So they are definitely very, very exciting franchise proposition for people who have 800 square feet of space. They need around 800 square feet plus. You will house 50 plus brands. They have arrangements of 50 plus brands which you can easily house in your store. The total investment is around 32 to 35 lakh rupees. The margins are around 34% on sales, and typically they're looking at a very, very high return on investment, which is approximately between, say, 18 to 24 months. So, this is an interesting business model. And I'm sure, if you look at a category which is for moms and which is for kids, then Me and Mom is an opportunity that you should explore. So this is opportunity number 3 that we have bought in. For all our audiences who've joined us little late, जो कोई भी हमारे audience हमको अभी add किए हैं, so we have these 3 opportunities that are showing up. So we have Dawa Discount, which is the first opportunity that I presented. It is a medicine store. It's a pharmacy store franchise, medicine store franchise, and it is available for your location at a very low cost. We have the Lassi Corner, which is the second opportunity, which is a F&B brand. I've explained different models about that Lassi Corner operates and which you can start. Me and Moms is the third opportunity, which is the retail opportunity that we bought in. So these are the first 3 opportunities that we've presented. We'll now move on to the opportunity number 4, which is Dhanush Engineering. Now, there are hundreds of education and training franchise opportunities that are available, especially during these times. A lot of these companies have moved to virtual models, and there are quite a number of interesting virtual plus physical offline education brands that are coexisting, which one should explore, start, and take up the franchise. If you're somebody who's inclined towards education, who's inclined towards imparting training, skill development, our National Skill Development Corporation under the aegis of our Prime Minister Narendra Ji Modi has put in great emphasis on skilling India. So this is one such opportunity. They are NSDC training partner. Dhanush Engineering typically trains electricians, plumbers, and AC technicians. Now this is another segment which has got tremendous demand, not only from India, but from the Middle East and from all other parts. The company's tied up with different companies internationally, nationally. And once the students come in from small town cities, they will all, they will all be able to easily, I think we have lost Mr. Nadeem Ji. I'm bringing him back. Yes. Nadeem Ji, can you hear me? Yes, I can hear you. Kindly put off your mic, please. Yeah. So
the next opportunity that we are speaking of is Dhanush Engineering. Dhanush Engineering is the number one vocational education franchise opportunity. Typically, you need 1,500 to 2,000 square feet of space, and the investment is around 12 to 15 lakh rupees. So this is a interesting franchise if you're interested in the education training space, especially in the MEP industry. The MEP industry has got tremendous scope. Construction in India is a developing country. Huge construction is going to happen in the coming times. So we are going to see a lot of potential in that. Nadeem ji, you'll have to switch off one particular मेरा device. Okay. So we are now moving मेरा माइक opportunity. Let's go on to the next opportunity. The next opportunity that we have on hand is a very exciting brand from South India, especially known. Their tagline is "The Taste of Chennai," and this is where Mr. and Mrs. Idli comes into the picture. It's a very exciting brand in the space of South Indian cuisine. And South Indian cuisine is extremely popular in Central India, especially if you look at providing authentic food. Then there is a good demand for South Indian food outlets. People love the dosa, especially in Central India, and I've seen huge crowds, especially when we've seen locations like Delhi and other parts of India. People are just relishing South Indian food. So Mr. and Mrs. Idli is one such opportunity, primarily for people who are interested in starting a South Indian food concept between say in the range of say 5 to 10 lakh rupees. They've got the space that they need is 250 square feet. So typically they've got three different models. In fact, if you look at it from a express store to a QSR to a full casual dining, they have all the three models that are available for audiences to kind of explore this particular opportunity. So whether it is and everything is between 5 to 15 lakh rupees. Whether you want to start a full-fledged restaurant, which is a 1,500 2,000 square feet of space, whether it is a casual dining restaurant or a fast food outlet, which is around 200 to 300 square feet. There's a takeaway model. So they've got everything covered. And the best part about this brand is that the royalty is fixed. You don't have to pay higher royalties. There is a 6,500, 7,500, and 10,000 rupee per month royalty based on the model that you take up. So this is the fifth opportunity that we would want to present. जो लोग अच्छा एक South Indian food pure vegetarian franchise देख रहे हैं, this is the opportunity that you should look at. So we've brought in 5 exciting opportunities for Bhopal, and I'm sure the audiences, we are taking messages from the audiences as the messages come through. Mr. Jain is saying 8 lakhs is not low cost. Yes, we have lower cost opportunities than 8 lakhs as well, Mr. Jain. And the different questions coming out, we'll be more than happy to be able to take on your questions and be able to give you the inputs that are required. So these are the 5 opportunities that we've brought in. Ankit Namdev is asking for your contact details, Nadeem ji. You can definitely reach out to Nadeem ji on. We will give you the number after this webinar. We will give you his contact ID, and you can reach out to him directly and be able to explore the opportunities that we've shown you here. So we have Dawa discount, the opportunity in the food in the pharmaceutical space, pharmacy store, Lassi Corner, which is a F&B outlet, Me and Mom, which is a retail outlet for a child and for a mother to be, Dhanush MEP Center, which is an education training franchise, Mr. and Mrs. Idli, which is a South Indian restaurant franchise. So
ये 5 अपॉर्चुनिटीज हमने प्रेजेंट की है। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर जो वेबिनार हम कर रहे हैं। सो आई थिंक दीज आर टिपिकली द क्वेश्चंस दैट द ऑडियंसेस वुड हैव, and I'll request Nadeem ji to bring out the questions that most of our audience and entrepreneurs whom he's interacting with have been having. Nadeem ji, over to you. You'll have to switch on your mic. We cannot hear you. Nadeem ji, please switch on your mic. Switch on your mic. Yeah, we can hear you now. Am I audible? I think you're having two systems there. Please shut it off in one system. If you have your phone on, please put off your phone. No, I do not have. Just give me a second. Your voice is echoing. Anyway, so can you set up? I think there is something. Okay, here I am. Now I think it's it's perfectly all right. Chaliye. Okay. Now thank you very much, Amit, for giving me this opportunity to ask you a few questions. The first question is that what will be the effect of second wave of COVID-19 on business? This is a burning question here now because we are having a lockdown here in Madhya Pradesh, specifically in Bhopal. On 19th we'll be open, so we are inside our houses, and all our audiences also, they must be inside their houses. Nobody is working today, and past for a couple of days we are not working at all. So this is a very important question, that what will be the effect of second wave of COVID-19 on businesses? Over to you, Amit ji. Yeah, so ideally, if you see, I think India is much better prepared now than when the pandemic hit us initially. I mean, we've been interacting with different brands and different categories of businesses. We did release a research paper on Sparkle Minds yesterday on what is the potential of this of the franchise industry for 2021, especially in the aftermath of this particular second wave of COVID-19. So that paper is going to be live on our sparkleminds.com website very soon, and audiences can read through that particular document that we've published, especially for people who want to understand what is going to be the effect of different businesses in 2021 and what could be the opportunities that one should look for. So I feel that yes, we are going to face challenges. Normal consumption is going to see a hit. Certain categories are definitely going to be hit very, very largely. But there are certain categories that are going to do very well as well. So some opportunities that we have chosen fits very well into the categories that are going to do very well even after the second wave, which means that the pharmacy, the logistics, the e-commerce logistics companies, so all of these companies, the cloud kitchens, where home delivery is happening. So all of these companies are going to do pretty well even in the after effect of the COVID-19. So I would say there is tremendous opportunities available out there. So all you need to do is to be able to ensure that आप उस opportunities को capitalize करें. आपको ये ensure करना है कि देखिए बहुत सारी retail locations available है, बहुत सारी दुकानें available है, बहुत सारी opportunities वहां पर है. आपने अगर correct opportunity को अभी पकड़ लिया तो ये बहुत ही एक important समय है. हमने देखा है पैंडेमिक में सबसे बड़े ब्रांड्स हैव टेकन बर्थ. तो आई फील कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा टाइम है. चेष्टा करिए, थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा सा समझिए कि कौन से अपॉर्चुनिटीज अपने लिए सूटेबल है, और ये टाइम रिसर्च के लिए अच्छा टाइम है. और नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर काफी सारे लोगों ने अपने जॉब्स भी खोए हैं, काफी सारे बिजनेसेस भी बंद हुए हैं. सो जिनको डाइवर्सिफाई करना है, जिनको अलग लाइंस देखनी है, जिनको अलग बिजनेसेस करना है, इस पैंडेमिक ने हमको सिखाया है कि हमको डिपेंडेबिलिटी एक चीज पर अगर हम रखेंगे तो बहुत मुश्किल होगी. सो डाइवर्सिफाई करिए, एंश्योर करिए कि आप अलग अलग चीजों में जुड़े हुए हैं, और फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन, ग्रेट वे टू टेक अप सम अपॉर्चुनिटीज एंड डीलेवरेज द रिस्क इवन फॉर एम्प्लॉइज. हस्बैंड वाइफ्स दोनों में से एक अगर काम कर रहा है और दूसरे की काम ठीक नहीं चल रही है तो अच्छी कोई फ्रेंचाइज देखिए और
स्टार्ट करिए. सो आई थिंक we'll have to learn to live with this pandemic, like everybody knows. This is not going away anywhere in the next 1 year for sure. So we'll have to live with it while the vaccination drive is on, while other things are happening, other developments are happening. We will have to learn to live with this and to be able to find ways to prosper with it, is what I'm trying to say. So select entrepreneurs will be able to pick up some good opportunities and build up some good businesses, and that is what I feel is going to be the effect of the second wave of COVID-19. और इसका या तो हम ग्लास को आधा खाली देख सकते हैं या ग्लास को आधा फुल देख सकते हैं. आई वुड से हमारे ऑडियंसेस को इसको आप आधा फुल देखिए और उसको कैपिटलाइज करिए और मैक्सिमाइज करिए. Okay, thank you, Amit. Now, should I go for the second question? Yes, please. आपने जो है ये जो 5 अपॉर्चुनिटीज भोपाल के लिए ऑफर करी हैं, उसमें एक क्वेरी है जिसमें why are these brands suitable for the city like Bhopal? Yes, Bhopal is a very interesting mix, like how we were discussing yesterday about what could be the ideal opportunities. Over the last 2 years, you have met thousands of entrepreneurs. In fact, a lot of them have spoken to you and have been interacting with you and have been asking you for some big brands. Everybody is looking at starting the Subways and the McDonald's and the Nikes and all of these brands. So while there are these top brands available, I mean, our next part of our webinar is that we're going to showcase the top 100 franchise opportunities of India, which most people are opting for, are looking forward to. But ideally, I feel that for a city like Bhopal, I think it's a mid-tier city, very value-conscious customers, and hence we've chosen opportunities that are great value for money. These are emerging opportunities, and like most big brands are already present in Bhopal. So there are quite a new type of opportunities that we've showcased here, and a lot of interesting big brands are also coming to play. But these are 5 opportunities that we felt will just be perfect for a city like Bhopal for this point in time. So that's why these 5. I think और भी बहुत सारी हैं जो आप अपने एंटरप्रेन्योर्स को जो भी आपके साथ जुड़ते हैं, जो भी आपके साथ पहुंचते हैं, तो उनको आप हेल्प कर सकते हो और इंश्योर कर सकते हो कि वो दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर करें उनके प्रोफाइल के तरह. सो नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर इंपॉर्टेंट फेसेट ऑफ हाउ शुड यू चूज अ बिजनेस इफ यू आर इन भोपाल. अगर आप भोपाल में हो और आप अगर एक बिजनेस देख रहे हो, तो आपको बिजनेस कैसे चूज करना है. सो नंबर 1 चीज जनरली क्या करते हैं लोग, जाकर के वेबसाइट्स देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स देखेंगे और उनको लगेगा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये ब्रांड अच्छा लग रहा है. बट उससे भी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप अपने बैकग्राउंड को समझिए. पहले आप ये देखिए कि कंपनी जो फ्रेंचाइज ले रहे हो वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, आपका रोल क्या है उसके अंदर, आप क्या उस रोल में फिट हो पाएंगे, क्या आपके पास ऐसा एजुकेशन है, क्या आपके पास ऐसा स्किल है, क्या आपके पास उतना टाइम है. सो कभी भी जब हम कोई फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी लेते हैं, तब हमको ये सारी चीजें देखनी है कि हमारे पास में एजुकेशन हमारा कितना है, बैकग्राउंड क्या है, स्किल क्या है, टाइम क्या है. और हर तरह के एजुकेशन, हर तरह का बैकग्राउंड, हर तरह के स्किल, हर तरह के टाइम लेवल्स के लिए, हर तरह के इन्वेस्टमेंट लेवल के लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. सो यू कैन, मतलब आप सिर्फ अपना प्रोफाइल को करेक्टली सेट करिए और आई एम श्योर कि बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है. आपको सिर्फ ट्यून्ड इन रहना है और हमारे कंसल्टेंट्स के साथ जुड़े रहिए, तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज हम ला करके देंगे जो कि एग्जैक्टली आपके लिए फिट है. वही चीज हमको करनी है. बहुत सारे ब्रांड्स इंटरेस्टिंग दिखते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो आपके लिए सही काम करें. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल, डू योर रिसर्च एंड एंश्योर दैट you choose an opportunity in Bhopal or Madhya Pradesh or across anywhere in India which is matching your profile. उसी हिसाब से आपको अपनी बिजनेस या जो भी अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं लेनी चाहिए. Okay, so I think once again to all the audience who are with us, I would request you to subscribe to our channels,
हमारे YouTube चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाइए, ट्विटर पे हमको फॉलो करिए, इंस्टा पे हमको फॉलो करिए, लिंक्डइन पे हमको फॉलो करिए। हम काफी सारा प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट आप मेरे पर्सनल प्रोफाइल से मेरे से जुड़ सकते हैं, और आई कीप ब्रिंगिंग आउट न्यू थिंग्स on a very regular basis for all our audiences who are connected with me, especially on LinkedIn and on Facebook. Of course, there's a very large audience. We have some very interesting Facebook groups that we are operating in. भोपाल का एक हमारा सिटी ग्रुप है जो बहुत ही पॉपुलर है, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप Facebook पे हैं तो भोपाल वाले हमारे ग्रुप पे जाइए और वहां पे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करिए। वहां पे रोज कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज हम लेकर आएंगे, और आप वहां पे हमारे साथ जुड़े रहिए तो आपको फेसबुक पे डायरेक्टली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो ऑल द ऑडियंसेस आउट देयर, वी आर नाउ गोइंग टू play the 100 top opportunities of 2020 for the lockdown period. This particular video is available on our YouTube channel as well. After this session also आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हैं, and then reach out to Nadeem ji for you to be able to start a new business of your choice. So I'm now going to run you through this topic.
Done. I think we are done with the top 100 opportunities. These are some of the opportunities that we have bought in for in the period of 2020 during the lockdown. We've showcased some exciting opportunities. The top 100 brands that are franchising in India. सो entrepreneurs जो भी बड़े ब्रांड्स देख रहे हैं, जो भी बड़ी फ्रेंचाइजीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट लेवल 10 लाख के ऊपर है, वो नदीम जी के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। और जिनको भी ये 5 जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज हमने अभी आज प्रेजेंट की हैं, जैसे अंकित नामदेव हैज जस्ट सेंट इन अ मैसेज सेइंग दैट इनके पास में 552 स्क्वायर फीट की एक दुकान है जो बवाड़िया कलान भोपाल के अंदर है, और उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया। अंकित जी, we've received your requirements. Nadeem ji will stay in touch with you. There are some very interesting opportunities for 550 square feet shop if you're interested in starting a franchise in your region. I also have Ankit Mishra who says that Chhattisgarh, especially Raipur, Bhilai and Bilaspur has got great potential for a valuable concept of franchise bazaar. I hope it has started its operation or will start ASAP. Ankit, we are ourselves looking at franchises in all these cities, especially Raipur. We are very confident that Franchise Bazaar has got great potential there. We have a lot of interest from entrepreneurs from that city. So we are looking at entrepreneurs in all the 3 locations, Bhilai, Bilaspur also, and across all major cities and towns of India. So we are going to be present in 100 cities and towns of India by in the next 18 to 24 months. And we are going to serve customers like how Nadeem ji is serving customers locally in Bhopal. We would have our own consultants the country. So audience who are watching this webinar and who want to join hands with Franchise Bazaar, you're more than welcome. Just send in your profiles. We'll check on your suitability, and if you match our requirements, then we'll be more than happy to appoint you as a Franchise Bazaar franchisee in your city. So Nadeem ji, आप काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वहां पर भोपाल में। बेसिकली आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या चीजें एंटरप्रेन्योर्स चाहते हैं भोपाल के अंदर? देखिए, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंचाइज बाजार के साथ में और जो क्लाइंट्स हैं यहाँ पे, उसमें बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेनली जो अभी तक मैंने इंटरेक्ट किया है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा अवेलेबल है, बट आइडिया की कमी है जिसके लिए हमसे लोग इंटरेक्ट करते हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो दूसरा जो मैंने ऑब्जर्व किया वो ये कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पिछले कुछ दिनों से या 1 साल से ज़्यादा हो गया है जो वापस लौटे हैं, दूसरे कंट्रीज़ में थे और वहाँ से वापस अपने नेटिव प्लेस पे आए हैं। तो उन लोगों को भी जो है वो नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो अप्रोच करते हैं और फूड फ्रेंचाइजीज को लेके जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस लोगों का रहा है फूड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो ये अभी तक का मेरा जो है वो एक्सपीरियंस है डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स के साथ बात करने के बाद। Brilliant. So in fact, that's what we are. We are a idea shop, or we are a place where entrepreneurs can get the ideas that they want. And especially because हमारी जो reach इतनी अच्छी है, आज हम 3000 brands plus काम करते हैं और अच्छे जुड़े हुए हैं. So I'm sure entrepreneurs can benefit from our expertise and from our understanding of the connect from the franchise industry and be able to give them the opportunities that they are looking at. So I have Mihant Alim Chandani ji who's saying that they are interested in drafting a franchise agreement. Mihant ji, you can reach out to sparkleminds.com and we offer end-to-end franchise development services there. अगर आपको franchise development कराना है तो हम उसको आपको हेल्प कर सकते हैं. So we've received your numbers. Somebody from my team will interact with you and will help you to understand the requirements that you have. So we'll surely if any brand or anybody wants to expand their business and are looking at franchise development services,
स्पेशली भोपाल से अगर किसी ब्रांड को ऑल ओवर इंडिया जाना है, तो then we can help them to expand their brand and ensure that we are able to take it across different parts of India. Not only India, we can take you international as well. So it was I think we had a fairly good time. We've got very good questions from our audience. And Bhopal, I'm sure that this is the beginning of our relationship. We're going to start off, giving you some great advice, giving you some great opportunities. And please stay connected with Nadeem ji, who's our franchise consultant in Bhopal, who's our local connect there for you. He's a very experienced person, very well connected, and I'm sure you'll be able to get the most out of our experiences together to be able to start a new business in Bhopal, to start a new agency, dealership, distributorship, franchise in Bhopal. So I once again thank you. अमित जी, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा Please. कि बहुत से मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें लोकल नंबर जो है वो कांटेक्ट नंबर ऑडियंस मांग रहे हैं तो भोपाल के लिए, तो मैं वर्बली उनको बता देता हूं कि मेरा मोबाइल नंबर है 9827055390। इस पे आप व्हाट्सएप के जरिए भी और डायरेक्ट कॉल के जरिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ओवर टू अमित। प्लीज रिपीट द नंबर वंस मोर टाइम, एक बार और रिपीट करिए ताकि ऑडियंस। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9827055390। जी अमित जी। ग्रेट, यस नदीम जी, थैंक यू वेरी मच। सो इट वाज अ प्लेजर भोपाल। आज के लिए इतना ही, हम आपसे जुड़े हुए रहेंगे until the next webinar for the next city. Please stay connected to our channel, stay connected to our page, and stay connected to our website. We look forward to helping you start a new business. Thank you very much. Thank you very much.